Hello, good evening everyone. केमती अछंती समस्ते वेलकम टू रे एकेडमी दिस इज विद्यासागर दास बहुत दिन पर आपन सहित देखा जस्ट मते खाली क्लियर कर दियंतु कि मोर प्रेजेंटेशन आपण मानको क्लियरली विजिबल होची कि नहीं आउ मोर वॉइस प्रॉपर्ली आछी कि नहीं जस्ट फॉर कंफर्मेशन मते जस्ट खाली क्लियर कर दियंतु कि मो वॉइस आ मो प्रेजेंटेशन क्लियरली आपन को विजिबल होची कि नहीं एथिरे जो मेंशन हेतबा लेखा गुडी को से गुडी को भलो भाबरे विजिबल होची कि नहीं आई होप समस्त जितकी भी जन एथर प्रिलिम्स अपेयर करते निजर रिजल्ट को अपेक्षा करते किसी जन मेन्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर देथिबे किंतु सबुर मूल रे जोटा कि हमर कंटेंट रही आछि ओडिशा करंट अफेयर रिगार्डिंग जोटा कि रिगरसली ओडिशा रे एबे सक्सेसफुली रन होची बहुत सारा टॉपर्स मध्ये याको एप्रिशिएट करछंती से जो कोनोसी भी प्लेस रही थांतु ना काहे कि जे कोनोसी भी एकेडमी रही थांतु ना काहे कि गोटिए नाम समस्त को मुहरे होची दैट इज दृष्टिकोण जोटा कि करंट अफेयर सेक्शंस रे आपन को कंटीन्यूअस मैनर रे आपन को से सक्सेस रिगार्डिंग टॉपिक सिलेक्शन इवन आपन देखिते प्रीलिम्स रे मध्ये किछ टॉपिक से करंट अफेयर सेक्शन रु ही आस्तला एंड आमे एई जो करंट अफेयर सेक्शन ने खाली करंट अफेयर ही आपन को प्रोवाइड करूना हो खास करी मु जते भी करंट अफेयर आपन मन को देई आछि एई सब करंट अफेयर गुडी को मेंस ओरिएंटेड खास करी मेंस प्रीलिम्स एंड वाइवा पर्यंत आपन को तीनटा जाको राउंड रे केमते भाबरे हेल्पफुल हबो ताको दृष्टि रखिकी ए दृष्टिकोण मु आपन को प्रिपेयर करछि एंड प्रति मास भलिया आमे किछि किछि नुवा जिंस एथिरे सिखिया पई पाउछु लाइक बहुत सारा कंटेंट हमको लाइक ओडिसा बहुत सारा स्टूडेंट करो एया क्वेरीज थाई कि सर ओडिसा रिलेटेड कंटेंट बहुत ही कम अछि जदि भी अवेलेबल अछि से बहुत ही लाइक स्कैटर्ड मैनर रे अछि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे तो ताकू केमती भाबरे एक्युमुलेट करिकि पडिबा सो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन आई कैन से दृष्टिकोण सो मो वॉइस प्रॉपर्ली आसु समस्त को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली समस्त को सुना जाउची मो वॉइस जस्ट कंफर्मेशन दे दियंतु केमती अछंती समस्ते एंड निजर प्रिपरेशंस केमती चलची मते ता भी इन्फॉर्म कर दियंतु जदि लाइक करनांती वीडियो को एबे मध्ये लाइक कर दियंतु जो माने शेयर करनांती वीडियो को मैक्सिमम शेयर करंतु सो दैट हमर ए जो कंटेंट गोटे मंथ पर जोटा आसीची एंड एते लेटर ऑन पार्ट रे आसीची सेरा समस्त को पाखरु एट टाइम पहुंची जाऊ एंड समस्ते ए जो दृष्टिकोण बेनिफिट नहीं पारंतु राइट केमिति अछंती समस्ते फर्स्ट ऑफ ऑल यस ओके वेरी गुड यस सो आजिरो करंट अफेयर सेक्शंस रे मु कहि रखिया पई चाहे कि जो लास्ट मंथ रो अक्टोबर मंथ रे हमें आज कवर करिवु एंड ए अक्टोबर मंथ रे बहुत सारा एमती आपन को देखिया पई मिलिबनी जोटा कि आपन को प्रीलिम्स बिकॉज़ आपन को एबे प्रीलिम्स नहीं तो प्रीलिम्स पई एबे वरीड हेबा किछि दरकार नहीं एथरो मेंस कंटेंट कोटा आसी पारे बा आपन को हेल्प करिवो से मेंस कंटेंट मु किछि एथरे इंक्लूड करछि अपार्ट फ्रॉम दैट किछिटा रिलेटिव जो टॉपिक्स जोटा हमर पुराना करंट अफेयर सेक्शन में कवर हेछि तार सहित मध्ये रिलेशन करी कि लिंक करी किछि किछि टॉपिक हमको देखिया पे मिलिछि एंड जोटा कि मु क्वालिटी मेंटेन फर्स्ट डे रु करी आछि कि एठी क्वांटिटी मैटर करेनी मु करंट अफेयर सेक्शन रे खाली फॉर द नेम सेक कि ओडिशा करंट अफेयर कहि कि सबु पार्ट रु करंट अफेयर मु पिक करेनी आपण माने जानिछन्ती भलो भाबरे सिलेक्टिव अप्रोच रे ही पिक करे जोटा कि आपण को ओनली सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रे ही पढ़िबार चांसेस अछि एंड आगो को बहुत सारा आउरी भी कंटेंट आसबो जोटा कि आपण मानन को निहाती भाबरे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करबो एंड एमिति सारा नोट आपण मानन को मुठी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करबी सो दैट आपण मध्ये सेल्फ रिलिएंट हे परिबे ओके सेल्फ सफिशिएंट हे परिबे यस ओके सो जस्ट मते कंफर्मेशन दे देंतु हमें स्टार्ट करबा शुड वी स्टार्ट जस्ट गिव मी अ थम्स अप और एनी काइंड ऑफ सिंबल एंड वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करंतु एंड जते भी जण आज लाइव देखुचंती तांकर लाइक निहाती भाबरे आसीबा दरकार शुड वी स्टार्ट वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू देखि परछु स्क्रीन ने समस्त एंगेजमेंट मु चाहिबी कि थ्रू आउट द क्लास आमे जते भी आवर क्लास करबा बा जते भी टाइम आमे क्लास करबा सेथिरे आपनकर सहयोग निहाती भाबरे मो सहित रहू आपण मानकर जहा भी क्वेरीज आपण माने कमेंट सेक्शन में मते चैट बॉक्स रे पचारि परिबे अपार्ट फ्रॉम दैट आपण कंटीन्यूअस मैनर रे मते किछि ना किछि सिंबल प्रोवाइड करंतु सो दैट मु जानि परिबी कि आपण माने एक्टिव अछंती एंड एक्टिवली मते सुनुचंती ओके सो स्टार्ट करबा देरी न करकी बिकॉज़ हमें बहुत दिन पर आसीचु बहुत दिन कोन
गोटे मास पर आपनको सहित टिके देखा मौका मिले मते एंड से भी गोटे एमिति भाव टॉपिक को बा एमिति मैगजीन को नहीं कि मु प्राउडली कहि परिबी कि ओडिसा रे आ कोनोसी प्लेटफॉर्म रे अवेलेबल नहीं जोटा कि आपनको एते ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करिवो। सो चलंतु हम स्टार्ट करिवा। सो ये होची अक्टोबर मंथ रो करंट अफेयर एंड अक्टोबर मंथ रो करंट अफेयर रे हमें किछि एमिति भाव रे करंट अफेयर देखिबा लाइक ओडिसा सीएम नवीन अनवील्स सांताली ओडिसा ओडिया डिक्शनरी आमो हॉस्पिटल स्कीम्स एक्सपांडेड Odisha lost 698 elephants, 7 tigers in 8 years. Odisha government bans highly toxic paraquat. Navin Patnaik announced rupees 1.5 crore for javelin star Kishore Jana. Odisha to pilot One Health mission aimed at curbing zoonotic disease. Odisha CM to lie Bhubaneswar Metro Rail Foundation on January 1. Odisha-based firm bakes deals to build firefighter fighting tool for IAF, Indian Air Force. Odisha CM Navin rolls out scooter plan for SHE members. Odisha launches concessional bus rides for women student PWD. Recently आपण माने जानिथिबे बहुत ही कंट्रोवर्सी मध्ये क्रिएट हेतला आपण माने फेस करथिबे ड्यूरिंग दशहरा ए सिचुएशन रे आसला तो जानिबा ता विषय रे अधिक किछि। Then Sri Ratna International Water Association's lauds Odisha's drinking or drink from tap जो योजना हमर सक्सेसफुली रन होची जोटा हमर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रिवील करथिले बा वेल करथिले ड्रिंक फ्रॉम टैप जो योजना अछि तो निहाती बाबरे ये गोटे सक्सेसिव स्टेप एंड समस्त प्रेज करछंती दैट्स व्हाई इंटरनेशनल याकू प्रेज करची। मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स बेनिफिट्स फार्मर्स प्रतीक्षा विन्स नेशनल फिल्म अवार्ड मोर मन अछि कि लास्ट टाइम भी आपन सहित एटा शेयर करथली सॉरी एतर मध्य ए जो नेशनल अवार्ड ये प्रेसिडेंट को हाथरु पाइछि। ओडिशा टू फॉलो न्यू स्ट्रेटजी टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट फॉरगॉटन क्रॉप्स गेट ओडिशा कैबिनेट अटेंशन कोवेटेड एग्रीकल्चर अवार्ड फॉर ओडिया साइंटिस्ट। सो ये होची कंटेंट लिस्ट आपण मन को पई एथिरु ही हमें बहुत सारा टॉपिक जोटा कि आपनकर ए अपकमिंग मेंस रे जेमति किछिटा टॉपिक आसीबो ताकू ही ध्यान रखि कि मो प्रिपेयर करछि। तो टिके हेल्थ कंसर्न पई मोर टिके वॉइस आपन को डाउन लागि पारे जदी ऑडिबल न होथाई त मते इन्फॉर्म कर दियंतु एंड टिके मते कोऑपरेट करबे। ओके चलन तुमे स्टार्ट करिबा फर्स्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें जदी देखुचे ओडिशा सीएम नवीन अनवील्स सांताली ओडिया डिक्शनरी राइट एटा आपन को आई थिंक देखा होतबो Odisha CM Navin unveils Santali Odia dictionary. So why in news? Because एबे रिसेंटली आपण देखिथिबे कि बहुत सारा न्यूज रे एबे न्यूज आसुची बारंबार रिगार्डिंग मुंडारी समाज नहीं कि हमर डायलेक्ट नहीं कि बहुत सारा स्क्रिप्ट नहीं कि लाइक एसटी पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन तांकर केमती उत्थान हो एंड तांकर स्क्रिप्ट केमती मान्यता पाउ हमें जानिछु। सो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक रिलीज ए सांताली ओडिया इंग्लिश शब्दकोश at Navin Nivas. The dictionary the dictionary has been compiled by an eminent expert on the Santali language, Chaitanya Prasad Maji. Okay, with the help of other linguists, it has been prepared by Janajati Bhasha Sanskriti Pratishthan. So, which organization? Se hochi Janajati Bhasha Sanskriti Pratishthan. Right? So, along with the Sabdakosh 21 primary textbooks in Saura, Kui, Kuvi, Gondi and Munda language were also released by the Chief Minister. So, Santali language has been included in 8th schedule of the constitutions. Tike voice re break अपन को feel होते पारे and health concern पाई ताकु टिके कोऑपरेट करिवे समस्त को एटा रिक्वेस्ट मो तरफ। सो मोर एठी गोटे क्वेश्चंस रहबो आपण माने एट सब तो जानले कि रिलीज हला गोटे सांताली ओडिया इंग्लिश शब्दकोश बट माय क्वेश्चन इज सांताली लैंग्वेज केबे 8 शेड्यूल ले ऐड हेतला तो जो माने भी जानि छथि मते क्विकली चैट बॉक्स रे मेंशन करंतु व्हेन द सांताली लैंग्वेज एडेड इन 8th शेड्यूल जो माने भी जानि छथि मते क्विकली रेस्पॉन्स करंतु कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स रे निजरो आंसर मते प्रोवाइड करंतु सांताली लैंग्वेज केबे ऐड हेतला को अमेंडमेंट रे ऐड हेतला
In which amendment? In which amendment? Quickly निजर response मते provide करंतु because ये ultimately आपनकर एतले भाषा regarding क्वेश्चन आसीबो आपनकर मेंस रे ये निहाती भाबरे हेल्प करियो कहिना आपण जानि छंती ना एबे जो भी माहौल चलीची लाइक राज्य रे से भाषा रिलेटेड बहुत सारा आंदोलन होउची तो आपण मानको जानि रखिबा दरकार कि एई सबरु क्वेश्चंस डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो पॉलिटी सेक्शन रु इंक्लूड करके आसी पारे तो जो मैंने भी जानि छथि मते कोहंतु कि सांताली लैंग्वेज आउ को लैंग्वेज सहित मिसिकी केबे 8 शेड्यूल ले एड हेतला इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट विश्व पात्र देछंती 2003 ओके बाकी समस्त जो मैंने भी देवा पे चाहछंती क्विकली निजर मत दियंतु 92nd अमेंडमेंट yes yes very good very good very good okay so 92nd amendment 2003 रे आस्तला को लैंग्वेज सहित मिसिकी आस्तला हु कैन से को लैंग्वेज सहित ये मिसिकी आस्तला को लैंग्वेज सहित ये मिसिकी आस्तला 2003 ओके विथ डोगरी नुहे ओनली डोगरी नुहे सो जो मैंने जानना थी मु कहि रखिया पे चाहे डोगरी बोडो मैथिली सांताली ए चारिटा लैंग्वेज आस्तले 92nd अमेंडमेंट रे 2003 रे बोडो डोगरी मैथिली सांताली मन रहला बोडो डोगरी मैथिली सांताली जीवा नेक्स्ट आमो हॉस्पिटल स्कीम्स एक्सपांडेड एबे स्कीम तो एक्सपांड हेची बट हमें जानिबा ता परे कि आमो हॉस्पिटल कोन एग्जैक्टली तो काहे कि न्यूज एतला So Chief Minister Naveen Patnaik accorded in principle approval for extending the AMO hospital schemes to all government hospital. The state government had decided to transform 147 पूर्वरु एया डिसाइड करा जाइथिला 147 health centers with high patient load under the schemes which initially aimed at improving infrastructure मूल लक्ष्य कोन थला infrastructure को grow करा जिवो and ensuring enough manpower in at least one identified health facilities in each assembly segments प्रतिटा assembly segments रे गोटे आइडेंटिफाई करिकि समस्त को जंती मेन पावर भी इक्वल अमाउंट रे मिली परिबो इक्वल रेशियो रे मिली परिबो एतद व्यतीत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हे परिबो ताकू ध्यान रखि कि 147 टा हेल्थ सेंटर ऊपरे विथ हाई पेशेंट लोड्स ए स्कीम्स लागू कराइतला द हॉस्पिटल टू बी ट्रांसफॉर्म included 30 district headquarters 30 subdivisional 82 community health centers 2 urban primary health centers and city hospital at Cuttack beside capital hospital and Raulkela government hospital at a cost of 750 crores 750 कोटी टंका सो आम हॉस्पिटल प्रोग्राम जानिबा ता विषय रे अधिक किछि आम हॉस्पिटल कोन आम हॉस्पिटल प्रोग्राम अंडर 5T इनिशिएटिव to transform and strengthen the community health center subdivisional health centers and district headquarter hospital under this initiative all community health centers CHC subdivisional health center SDH and district headquarters hospital DHH will be strengthened in phase wise yaku strengthening kara jibo and this will be started from January 2023 and priority will be given on the strengthening of fast referral units so fast referral unit को केमति भाबरे strengthen करा जिवो तार गोटे जस्ट एक्सटेंड करा हिची ताकू जस्ट इंक्रीज करा हिची तो आम हॉस्पिटल ए जो प्रोग्राम टी पूर्वरु आस्थिला ओके गॉट इट जिबा नेक्स्ट Odisha lost 698 elephants, 7 tigers in 8 years. एठी आपनको माइंड रे गोटे डाउट आस्तबो कि सर एटा तो बहुत ही फैक्चुअल जिंस अछि एठी हमकु कोन मिलिबो तो गेस करले एठी हमकु कोन मिलि पारे जस्ट टॉपिक को जिबा पूर्वरु आपनको मतामत निहाती भाबरे मु जानिया पई चाहिबी कि ओडिशा lost 698 elephants 7 tigers in 8 years ए पर्टिकुलर टॉपिक रु बा ए पर्टिकुलर न्यूज रु हमें कौन एक्सट्रैक्ट करिबा
for our mains examination because ये बहुत ही factual दिया है, right? Factual दिया है, yes, लोपामुद्रा, DHH infrastructure development. तो एथरो हमें कौन एक्सट्रैक्ट करिबा बा कौन इन्फॉर्मेशन एमती अधिका पाइबा जोटा कि हमकू आगो को जाई कि बा अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन ने हमकू हेल्प करिवो मते तार गोटे हिंट्स गोटे ग्लिम्स प्रोवाइड करंतु कौन एग्जैक्टली ये देन हमें ताकू डिटेल डिस्कस करिबा खाली जस्ट ए हेडिंग को पढंतु कौन लिखाइ छि न्यूज रे ओडिशा लॉस्ट 698 एलिफेंट्स 7 टाइगर्स in 8 years so 8 the music forest and wildlife conservation first concept ए माइंड को आछि आउ केते जनकर माइंड को कोन आछी कि मेंस रिलेटेड एटू कोन क्वेश्चन बनी पारे क्विकली मते कमेंट करंतु जो माने भी लाइव देखुचंती जो माने भी लाइव सुनुचंती इंटरैक्ट करंतु मो सहित एंड वीडियो को लाइक करिया पे जमारो भूलिबेनी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस ये सौम्या एंड 8 डी म्यूजिक ऑलरेडी देई साचंती आउ किछि केई देवा पे चाहउचंती गजबंधु स्कीम ओके वेरी गुड ए एंगल को भी आपण इनक्लूड करि परिबे गजबंधु स्कीम एंड अगेन गजबंधु स्कीम मध्ये मु मोर करंट अफेयर रे ऐड करिछि पूर्वरु भलो भाबरे मेंशन करछि भलो भाबरे इलाबोरेट करछि जो कंटेंट आपण माने पाई परनांती मोर पूर्व वीडियो देखिबे किबा फ्रीली अवेलेबल अछि हमर रे एकेडमी साइट रे ताकू जाय कि आपण माने डाउनलोड करि परिबे आउ कोन ही पारे ओडिशा लॉस्ट 698 एलिफेंट 7 टाइगर्स इन 8 इयर्स आउ कोन ही पारे Yes, man, human or sir, human and animal conflict. Very good. Aishwarya, very good. Okay, मु ए एंगल टा ही चाहूतली exactly because आपनकर मेंस एग्जामिनेशन ने जाई कि ओडिसा रो मेन आउ एनिमल बा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रो गोटे फिगर आपन को निहाती भाबरे आसीबो एनवायरनमेंट सेक्शन नु आसीबो फॉरेस्ट्री सेक्शन नु आसीबो जेहेतु ये ओडिसा रो रिपोर्ट बारी छि तो निहाती ऐश्वर्या एंड बाकी करो भी क्वेश्चन बाकी करो भी नजरिया बा पर्सपेक्टिव बा दृष्टिकोण हम दृष्टिकोण रो माने ही होची पर्सपेक्टिव ओके सो एई जो पर्सपेक्टिव आपण मानकर क्लियर जेमति रही जिवो बा क्लियर हबो कि केमति भाबरे मेंस रो क्वेश्चन आसी पारे एथिरु तो ऐश्वर्या वेरी गुड ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ओके सो डिस्कस करिवा डिटेल ले Why news? Odisha lost at least 698 elephants because ये बहुत ही फैक्चुअल फिगर आमे केही भी याकू मने पकेबा नहीं किबा मने रहिबो भी नहीं so 698 elephants in the last 8 years 7 tigers and 48 leopards also died during the period disease electrocution then train accident, road mishaps and poaching are the primary cause of death and these flagship species between 2015 to 16 and 2023 to 24, right? At least 602 people also died in elephant-human conflict. Very good point. Okay, because एथिरे खाली एनिमल माने ही मरनांती मनुष्य माने भी मृत्युवरण करछंती in the last or in the state in 5 years between 2018 and 19 and 2022 and 23 besides 127 domestic animals have also been killed while 9611 houses were damaged in conflicts he said and as per the last elephant census 2017 2017 जो last hitla the state has 1976 jumbo similarly the state has 780 big cats including 20 tigers the minister informed तो एबे हम ओडिसा रे नेशनल लेवल ले जो टाइगर कैलकुलेशन हेतला बा टाइगर मानकर सेंसस हेतला नेशनल लेवल ले ओनली 20 टा ही टाइगर हमरो ओडिसा रे आकलन कराई छि ए पर्यंत ओडिसा सरकार ताकू कंडक्ट करे नाही नेशनल लेवल ले हिची दैट्स व्हाई ओडिसा गवर्नमेंट ट्राई करछंती कि एबे एक्चुअल अमाउंट रे टाइगर केते अछंती एक्चुअली टाइगर हमरो स्टेट रे केते अछंती ताकू फाइंड आउट करिया पे जदि सेति की माने नंबर हमकु जाना पड़े ताले तांकर रिहैबिलिटेशन पदक्षेप में नहीं पारिबा सो देखिबा एठी आउ कोन ना एफर्ट्स कोन निया हिची मोर in violation space or inviolate space grassland and artificial ponds are being created
आम पोखरी योजना आपण मानको मने थिबो ओडिशा गवर्नमेंट तरफ आम पोखरी योजना हो किबा से तो गाँ साही रे क्रिएट होची एमती बहुत सारा अबंडेंट प्लेस रे मध्य गवर्नमेंट तरफ क्रिएट करा होची जोथि कि एनिमल माने प्रॉपर वे रे पानी टिके पाई परिबे ओके सो ponds are being created in the forest areas while the focus is also on the plantation fruit bearing trees जोथि कि तांको प्रॉब्लम हमनी जो माने वेजिटेरियन जो माने फळमूल खांती तांको जंती प्रॉब्लम हमनी से माने प्रॉपर वे रे फूड बा फ्रूट पाई परिबे सो फ्रूट बियरिंग ट्रीज एंड इंक्रीजिंग प्रे बेस तो समस्त गोटे मेंटेन करिया पई एठी पदक्षेप नि आइची टू चेक पोचिंग द मिनिस्टर सेड एंटी पोचिंग कैंप्स have been set up while special squads are engaged for regular patrolling in sensitive areas जोटी जोटी sensitive area अछि जो जो एरिया रे मैक्सिमम पोचिंग बा शिकार करा होउची अवैध शिकार करा होउची से जगह केमती भाबरे अटका जाई परिबो तो पेट्रोलिंग करा होउची वेरियस स्क्वाड रे डिवाइड हेकी so the government is also emphasizing public awareness and ताठु भी बड़ कथा कि public awareness निहाती जरूरी जदी public aware न हेबे ताले केते बेले भी पॉसिबल नाही केते बड़ जो चेंज को हमें आनी परिबा समाज रे ओके so all India tiger estimations report put the big cat figure on the state at 20 एटा बहुत ही चिंताजनक विषय ओके and what is human wildlife conflict एटा होची मूल मुद्दा आम पई हमर मेंस पई को लाइक क्वेश्चंस आसी पर एठू एटा ही होची हमकु जानिबा दरकार व्हाट इज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट so human wildlife conflict occurs when interaction between human and wildlife result in negative outcomes now human and wildlife conflict केते बडा हो जेतले नेगेटिव इंटरैक्शन होतबो पॉजिटिव इंटरैक्शन में किछि असुविधा नै नेगेटिव इंटरैक्शंस माने परस्पर को क्षति घटौतबे so ताको कोइ जे conflict so human wildlife conflict occurs when interaction between humans and wildlife result in negative outcomes such as loss of property livelihood or even life so defensive and retaliatory killing could drive these species extinct right so आपण माने भलो भाबरे सुनुचंती जस्ट खाली मझरे मझरे मते पिन कर देथांतु किबा आपण इन्फॉर्म किछि वे रे कर देथांतु सो दैट मु भी गोटे क्लियर थाई कि आपण माने अटेंटिवली सुनुचंती जस्ट गिव मी अ थम्स अप फॉर एनी काइंड ऑफ सिंबल हमर जो कन्वर्सेशन टाइम पीरियड रे एंड किछि भी जदी माइंड रे डाउट अछि ताको मते शेयर कर देथांतु मु सेति की टाइम पीरियड भितरे आपनकर आंसर भी मु प्रोवाइड करतबी सो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कॉजेस कोन रहि छे बे जानिबा कारण कोन इन मॉडर्न टाइम्स रैपिड अर्बनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस so मने रखंतु अर्बनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस इज द की ये डेवलपमेंट पई हमर जति की जरूरी डिस्ट्रक्शन पई मध्ये सेति की मूल कारण डिस्ट्रक्शंस लैंड एक्वायर बेसी होची लैंड प्रदूषण होची okay have resulted yes Anil yes have resulted in the conversion of forest land एबे जंगल जमी को कन्वर्ट करा होची ओके जंगल जमी को जेतले कन्वर्ट करा होची फॉर द नेम सेक ऑफ अर्बनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस की खाली हमें अर्बनाइजेशंस आनिबु इंडस्ट्रियलाइजेशन आनिबु एंड हमें जंगल जमी को नै की इंडस्ट्री लैंड रे कन्वर्ट करछु सो सेतिरे कोन होची जो वाइल्ड लाइफ मानकर हैबिटेट होची से संकटापन्न होची राइट yes thank you all of you so as the road and rail network have expanded through the forest range एबे हमरो पॉपुलेशन गोटे इंक्रीज होची ता पय लैंड इंक्रीज होची अर्बनाइजेशन इंक्रीज होची तो लैंड इंक्रीज होची ता सहित हमरो जो ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होची सेतिरे कोन होची ना जोठी जंगल जमी जाईची सेठी हमें रेलवे लाइन बिछौछु सेठी हमें रोड कंस्ट्रक्ट करूछु तो ता द्वारा होची कोन जेतले रोड से बारंबार सेति की लाइक साइलेंट एरिया रे जते बारंबार जाउची किबा लेट्स से गोटे रेलवे पाथ सेठी हम गोटे न्यू क्रिएट करछु ताले अननेसेसरी बहुत जनकर डेथ होची लाइक बेले बेले ह्यूमन कर होची एंड मैक्सिमम टाइम हमरो एलिफेंट गुडा कर होची नेग्लिजेंस फलरे okay so population growth has also resulted in many human settlements near the edge to protect area आगुर आपण माने देखिथिबे गां गंडा रे लाइक पहाड़ पाखापाखी एरिया रे किबा जंगल पाखापाखी एरिया रे लोक के रहु नतले किंतु आज का डेट रे जोठी पारछंती सेठी रहउछंती जोठी पारछंती सेठी सेटलमेंट करूछंती ता फल रे नेगेटिव इंपैक्ट कोन पडुची बिकॉज़ ह्यूमन पॉपुलेशन बा पॉपुलेशंस तो इंक्रीज होची ताकर रहिबा पई प्लेसेस भी नाही एंड सेति पई से माने जंगल जमी को धीरे धीरे निजर करिया पई लागुछंती तो जंगल रे बास करतवा जो माने एनिमल्स माने
सेमानकर प्लेस एबे धीरे धीरे बा हैबिटेट एबे धीरे धीरे कमुची सो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट देखिया पई मिलुची ओके सो द stochastic event such as fire are, are difficult to predict and control, and they also have an impact of human wildlife conflict. So invasion of alien species जोटा कि आपण environment section में पढ़ी थिबे invasion invasive species or invasion by alien species से जदि enter करछि ताले कोन होछि पाखा पाखी जो पूर्वरु जो species थिले ताको पई से hamper करूछि ताको पई से difficulty create करूछि right so it occurs when a plant or animal species that is not native to an area spread rapidly in that habitat because तार के शिकार करिया पई ना कि बा तक के खाइया पई ना तो क्विकली से कोन करबो रैपिडली ग्रोथ करिवो इनवासिव स्पीसीज ताको कुआ जाय कि एलियन स्पीसीज कुआ जाय जोठी कि सडनली तार प्लांटेशन हुए कि सडनली सी प्लेस पाई आफ्टर आफ्टर दैट कोन हुए से बहुत स्पीडली फ्लोरिश कर जाय बिकॉज़ तार के predator न थांती prey न थांती okay so usually having a negative impact on the species are the that are already present so this is primarily due to the irresponsible human error during imports and export some invasions may also result in endangerment or extinctions of native species किछि किछि इन्वेशंस लाइक किछि किछि जदि हमें स्पेसीज को हमें एठी कोनस भी प्लेस रे हम जदि इंक्लूड करछु ताले से वन टाइम रे से कोन करबो फ्लोरिश कर जो बाकी स्पेसीज मानको को भी हेल्प कर जो किंतु किछि किछि एमती स्पेसीज अछि जो ठीक हमें जदि ताको एठी प्लेस दोउछे ताले बाकी सेतिरे थिबा पूर्वरु थिबा स्पेसीज गुडीकर मृत्युर कारण से होउची सो इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कोन रहिछि इंपैक्ट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हैज the greatest direct impact on wildlife and that live near it. While human wildlife conflict can cause species decline and extinctions, communities can suffer financial losses as well as threats to the health and safety, livelihoods, food security, and property. The cost of living with wildlife are unequally distributed and disproportionately fall on the community that frequently face systematic barriers. Okay, systematic barriers धीरे धीरे gap गोटे create होची and barriers मध्ये create होची have incomes well below the poverty line and access to few economic opportunity whereas the global community benefits from the healthy wildlife populations and ecosystem that allow us to survive provide food and enable livelihoods okay then human wildlife conflict is thus a development of humanitarian issues as well as a conversation or conservations conservation concern affecting the income of farmer herders and artisanal fishers okay particularly those earning less than the poverty line right so yes initiatives to reduce human wildlife conflict kon सब initiative निया जायछि गवर्नमेंट तरफ रो initiative kon निया जायछि so the supreme court recently affirmed elephants rights to passage a closer to the resort in Nilgiri elephant corridor it held that it was the responsibility of the state to protect keystone species जो species गुडा को तांकर जो परिवेश रे सबुठारु टॉप मोस्ट प्लेस अधिकार करंती जहांकर किछि भी जिंस रे बाकी स्पेसीज माने को हेल्प मिले बा कोनसी पार्ट रे कोनसी भी प्रक्रिया रे बाकी स्पेसीज माने फ्लोरिश करंती तांको हेल्प मिल जाय डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे रे सो सेही स्पेसीज को कहा जाय कीस्टोन स्पेसीज सच एज एलिफेंट okay or other predators right so such as elephants so the Odisha government has begun scattering seed balls or bombs within various reserve forest areas to increase food stock or wild elephants for wild elephants. So the Uttarakhand government used bio fencing to reduce main animal conflict. बाकी सब स्टेट कौन सब पदक्षेप नहीं चंती ताको मध्य मुठी मेंशन करछि. So in sorry in 2018 the Uttar Pradesh government gave its in the principal approval to the include main animal conflict in the state disaster response fund. A new conservation initiative in India's Western Ghat has used texting as an early warning system to prevent human animal conflict.
or elephant conflict, right? So एतरे SMS माध्यम रे application sorry application माध्यम रे ताकू सॉल्व करा जाउची ओके मे बी आगु जे कि एआई रो यूज करी कि गवर्नमेंट बहुत सारा पदक्षेप बा स्टेप नहीं पारिबे yes animal is our heritage elephant so then आमे गोटे unusual way को जिबा unusual news को जिबा जोटा कि हमरो डेली लाइफ रे तो प्राय सुनिया पे मिलेनी किंतु yes exactly ये हमको डायरेक्टली नुहे इनडायरेक्टली हमको हेल्प करिवो कोन से भी जिंसो फार्मिंग सेक्टर रे बुझिया पई सो ओडिशा गवर्नमेंट हैज बैन हाईली टॉक्सिक paraquat एबे paraquat कोथि पई इंपोर्टेंट काहे कि ओडिशा गवर्नमेंट याको बैन करले ताको हमर जानिबा निहाती दरकार व्हाई न्यूज़ सो रिसेंटली the state government has banned the use of paraquat a highly toxic substance widely used as herbicides for destroying weeds ये गोटे herbicides ओके जो weeds बा घास थांती ओके तो ताकू ये किल करिया पई हेल्प करे सो दैट कोन हबो मैक्सिमम न्यूट्रिशंस जोटा कि प्लांट थिबो रियल प्लांट से ही पाई परिबो वीड्स गुडा को से माने पाइबेनी बा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू रे एबे ताको भीतर कॉन्फ्लिक्ट जेमति देखा न जिवो so with the ban order coming into effect the sale stock distributions manufacturing and use of this toxic chemical has been prohibited in the entire state as per the provisions, the Insecticides Act 1968, the ban will be initially effective for a period of 2 months. प्रथम 2 मास पर्यंत ए बैन को रखा जिवो पायलट बेसिस रे पायलट मोड रे सो दैट देखा जिवो कि कोन सब होची तार पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग साइंटिफिक ओपिनियन जदी साइंटिफिक ओपिनियन ताको मिलुची from research institute and other stakeholders will also propose the center for a permanent ban of chemical in Odisha a chemical paraquat ro jenti permanent ban hejibo jodi samaste expected way re tanku like provide kale suggestion dele okay or feedback dele then what is paraquat ame dekhidoba paraquat kon paraquat is a toxic chemical that is widely used as an herbicide or plant killer ताकू कुआ जाए plant killer so primarily for weeds and grass control okay घास जो रही right so weeds and जो grass control पाई where paraquat is found and how it is used कोठी मिले so first of all paraquat was first produced in for the commercial purpose in 1961 आगरू सेमती कोनसी भी स्टेट रे एते बैन करना हती किबा तारो न्यूज़ पर्यंत अवेलेबल नहीं को स्टेट paraquat को बैन करछंती कि नहीं किंतु एथर ओडिशा गवर्नमेंट एटा स्टेप ता नहीं छी कि फास्ट 2 मास पायलट बेसिस रे पायलट मोड रे ओके कि 2 मास आगे देखा जाऊ 2 मास परे जदी समस्तंकर फीडबैक आसी गला जदी आगरो हेतांता ताल निहाती बाबरे से केस स्टडीज देखि कि से माने कोन कथांते याकू परमानेंट बैन कथांते ये ओडिसा रो फर्स्ट मूव ओके ओडिशा फर्स्ट टाइम पे एटा को मूव टा को नेची कि paraquat जोटा अछि यूज करा जाय हर्बिसाइड्स जो गुळम हे गला घास हे गला ओके तो ताकू केमती बाबरे नष्ट करा जिवो बिकॉज़ से अननेसेसरी कोन करे जो मेन प्लांट अछि ताकू से हैम्पर करे तो ताकू रक्षा करिया पई paraquat हमें यूज करथुलु बट समहाउ ये ह्यूमन बॉडी भीतर को भी मध्ये चली आसला एंड बहुत सारा पॉइजन्स मध्ये ये क्रिएट करछि एट द सेम टाइम डिजीजेस मध्ये देखाउछि सो हाउ paraquat वर्क्स केमती वर्क करे the extent of poisoning caused by paraquat depends on the amount को amount रे यूज हिछि so route and durations of exposure and the person's health conditions at the time of exposure now paraquat cause direct damage kahar damage करे when it comes into contact with the lining of the mouth stomach and intestine जदि डायरेक्टली ये मुह पाकस्थली किंबा जो क्षुद्रांत्र एंड बृहदांत्र जोटा हम इंटेस्टाइन कहूछु जो माने भी ओडिया मीडियम पिला से माने भी बुझी पारथुबे सो यार जदि डायरेक्ट कांटेक्ट रे आछी ताले ये कैन मेक सीरियस डैमेजेस ओके सो आफ्टर paraquat को 2 मंथ नाम प्लीज एटा देखंतु एटा जेहेतु एटा अक्टोबर रे बारची तो सेही अक्टोबर नवेम्बर खाली जस्ट निया आइची ओके जस्ट स्टेप निया आइची तो एथिरे आपण फैक्चुअली एंटर करंतुनी बिकॉज़ ये एग्जाम रे एटा आसीबोनी को 2 मंथ बैन कराइतला राइट जदि बुझी पारछंती जो कांसेप्ट को काहे की मु याको इंक्लूड करिछि
बिकॉज ये गोटे फास्ट माने स्टेप नि आइछि ओडिशा गवर्नमेंट तरफ रु कि ये सब प्रॉब्लम हमर होउछि तो ताको 2 मास जस्ट आपण भी लाइक कोन से भी जिंस तले बंद करंती ताको बा यूज करंती ताको 2-3 मास रो आपण को यूज पई देई थाई तो 2-3 मास सॉरी किछि भी डेज स्पेसिफिक डेज आपण को यूज करिया पई देई थाई आफ्टर दैट निजर फीडबैक हिसाब रे आपनकर पसंद हिसाब रे आपण ताको बाय करिवे किबा ताको रिटर्न कर देबे एग्जैक्टली सेमती पाराक्वेट रो जहा सब लाइक डिसएडवांटेजेस रहिछि ओडिशा गवर्नमेंट मेन स्ट्रीम को आनी एंड मेन स्ट्रीम को आनला पर 2 मास जस्ट बैन करछि याकू ओके 2 मास बैन कला पर से कौन करछि बाकी जो माने एनवायरमेंटलिस्ट अछंती ओके जो माने भी फीडबैक प्रोवाइड करबे रिनाउंड पर्सन्स अछंती रिसर्चर्स अछंती तांकर जदी लाइक से जो एग्जामिन करछंती से सक्सेसफुल हे गला एंड ये गोटे बेंच सब्सटेंस हिसाब रे घोषणा हे गला ताले भारत सरकार को अनुरोध करके बा भारत सरकार को जणाई तांकर प्लानिंग होछि कि पूरा माने सब दिन पई जेमति ये बैन कर दिया जेबो ओके क्लियर सो हाउ पैराक्वेट वर्क्स सो एटा हम डिस्कस करलु कि पैराक्वेट कॉज direct damage when it comes into contact with the lining of mouth stomach and intestines after paraquat enters a body it is distributed to all areas of body जेतले से बॉडी रे एंटर करे या आफ्टर दैट सबू लाइक पॉइजन भलिया सबू बॉडी पार्ट को मारी जाय सो paraquat cause toxic chemical reactions to occur throughout many parts of the body primarily in the lungs liver and kidneys right so cell in the lungs selectively accumulated paraquat like by active transport then injections of small and medium amount of paraquat may leads to development of the following adverse health effect. Coco adverse health effect. First heart failure, then second kidney failure, liver failure and lungs failure or lungs scarring. So basically कौन देखा होची कि ना एते सबू like disadvantages अछि paraquat रो so in general जदि हम देखिबा कौन हुए जते हम ताको intake करछु injections करछु for large amount or paraquat leads to the following signs and symptoms like acute kidney failure, confusions, coma, fast heart rate, injury to heart, liver failure, lung scarring, muscle weakness, pulmonary edema, okay, fluid in the lungs, respiratory breathing failure or respiratory failures and seizures. Right? एगुड़ाक सबू देखा जाए देन आम नेक्स्ट जीवा नवीन पट्टनायक अनाउंस्ड रुपीज 1.5 crore फॉर जावेलिन स्टार किशोर जेना एट द सेम टाइम आपको जन रखा चाहे कि अमित रोहिदास को मध्य अमित रोहिदास जो मैंने जानी अमित रोहिदास को फील्ड रु बिलोंग करती मत इनफॉर्म करंतु और दिस इज वेरी सैड परमानेंटली स्टॉप हेले भलो मो जानिबारे 5 जनकर डेथ कलेनी सबू ड्रिंक करके यस एथिपाई ही ओडिशा गवर्नमेंट स्टेप की नहीं छंती सो मोर क्वेश्चन होची कि अमित रोहिदास को मध्ये 1.5 crores मिलची तो मते कोंतो अमित रोहिदास को फील्ड रो बिलोंग करंती एंड यस कोंतो यस नो पारा एथलेटिक नुहे अमित रोहिदास यस हॉकी ओके हॉकी राइट सो वाइन न्यूज बहुत ही स्मॉल कंटेंट ये आपण माने भी जानछथि स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हमर एते आसेनी बट फिर भी ये जेहेतु इंटरनेशनल लेवल ये हमर ओडिसा रा नाम करछथि सेति पे हमको जानिबा निहाती दरकार ही इज फ्रॉम पुरी ओके सो like Kishore Jena bagging the historic silver medal at 19th Asian Games. The Odisha government announced a cash award of 1.5 crore for the javelin star. बुझेला
Then आमे जिबा next, Odisha to pilot one health mission aimed at the curbing zoonotic diseases. यदि आपन को मने थिबो zoonotic diseases पूर्वरु आमे डिस्कस करि साचु मु ऑलरेडी zoonotics कोन ताको डिस्कस करि साची बट तापरे मथि आज zoonotics विषय रे आउट के डिटेल जानिबा तो चलंतु कोन हेछि न्यूज रे So why news? So Odisha is set to pilot the ambitious One Health program that aims to tackle zoonotic disease like anthrax, scrub typhus, rabies, swine flu, etc. Recently आपण जानथिबे कि scrub typhus एबे ओडिसा रे केते मात्रा रे मुंड टेकितला न्यूज टेलीविजन मीडिया प्रिंट मीडिया रे आपण माने सब जगह न्यूज देखिथिबे कि scrub typhus इवन scrub typhus रो टेस्ट बारंबार एते होतला डेंगू एंड scrub typhus रो तो खास कर भुवनेश्वर एरिया रे मध्य ये बहुत ही जरूरी हितला एबे मध्य डेली बेसिस रे केसेस बहुत सारा आछी तो एई ये होची जेहेतु रिसेंट न्यूज सो रिसेंट न्यूज रे कास तो रिलेटेड zoonotic diseases. So there has been a significant rise in the anthrax and scrub typhus cause in the recent times. One Health is an integrated and unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals and ecosystem. Then आमे जानिबा कि zoonotic diseases कोन zoonotic जोटा कि zoo means animal कथारु हमकु आसीता zoonotic diseases. So like animals like the live animal markets like SARS, COVID-19, avian influenza, एथिरु देखिथिबे कि लाइक वाइल्ड लाइफ हंटिंग जदि हम करछु ताले एचआईवी इबोला एगुडा सब आस्ताय यस स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस मेंस रे आसीबार चांसेस नै मु आपन को किछरा पूर्वर मध्ये डिस्क्लेमर दे दितली कि एटा ओनली मेंस रिलेटेड मैगजीन हुए ये मेंस प्रीलिम्स एथ्रु क्वेश्चन आसीबो स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आसेनी आपनकर क्वेश्चंस मेंस रे ओके ये मेनली आपन को नेक्स्ट ईयर मे बी प्रीलिम्स रे हेल्प करि पारे किंबा ओडिसा रो डेवलपमेंट रे लाइक को फील्ड रे डेवलपमेंट ऑफ ओडिसा लास्ट 5 ईयर रे कोन डेवलप करछि जदि एमति किछि सिनेरियो आसे किंबा स्पोर्ट्स रिलेटेड आपनकर एसे टाइप रो किछि फिलोसॉफिकल किछि जिंस आसे सेथरे यू कैन ऐड इट आपण माने सेथरे मध्ये ऐड करि परबे तो सब जिंस रो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्टेंस रही थाए खाली हमको जानिबा दरकार कोठी कोठी यार यूज हे पारिबो ओके सो ये तो प्रीलिम्स रे नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स रे आसीबो कि नै हमें डाउट बट मेंस रे जदि आसीबो हमें एमती एक्सपेक्ट करि परबे कि जदि ओडिसा रो डेवलपमेंट लास्ट 5 इयर्स तर कि कोन रही छी को सेक्टर रे ओडिसा डेवलप करिछि लाइक साइंस एंड टेक रे हो एग्रीकल्चर रे हो स्पोर्ट्स रे हो जदि गोटे सेमती सिनेरियो वाला क्वेश्चंस क्रिएट करा जाय आपन को सामना को आसे तो आपन गोटे टोटल स्पेक्ट्रम आपण ऐड करि परिबे बा माइंडसेट आपण करि थांतु कि एमती टाइप रो स्पेक्ट्रम मते ऐड करिवार अछि जदि भी किछि लाइक एसे पार्ट रे आसी जाउछि आपण जानछि मैक्सिमम फिलोसॉफिकल एसे ही आछि बाय चांस फिलोसॉफिकल एसे रे मध्ये हेल्थ रिलेटेड किछि आसी जाउछि बा स्पोर्ट्स रिलेटेड किछि आसी जाउछि व्यायाम प्राणायाम ए रिलेटेड जदि किछि आछि योगा रिलेटेड तो यू कैन ऐड कि ओडिसा रो स्पोर्ट्स सेक्टर केते कोन अछि कंट्रीब्यूशंस एंड एबे रिसेंटली एमती सब प्रोवाइड कराउछि ताको प्रोत्साहित कराउछि सो दैट ओडिसा आहुरी ग्रो करिवो जदि स्पोर्ट्समैनशिप जो स्पिरिट सेटा समस्त को भितरे जागिबो तो ताको ही एप्रिशिएट कराइछि तो हमें बैक करबा जूनोटिक डिजीज ऊपर सो लाइक डोमेस्टिक एनिमल थारु हमको मिले हेंड्रा एवियन इन्फ्लुएंजा निफा एंड इंटेंसिव वाइल्ड लाइफ फार्मिंग रे हमको मिले कोविड-19 रैबीज एवियन इन्फ्लुएंजा सो बेसिकली जूनोटिक डिजीज माने जो पशु पक्षी को थारु हेइतै पारे So 5 facts zoonotic disease. What are they? So zoonotic disease are infectious diseases that are transmitted between animals and humans. Some common zoonotic diseases includes Ebola, rabies, Salmonella and anthrax, Lyme diseases and Escherichia coli or E. coli and bird flu. HIV began as zoonotic but later muted into human only strain by strain से human body को आस्ते how do they spread केमती से spread करते zoonotic diseases can spread through direct okay through direct contact or direct contact or indirectly through food water or the environment so the role of changing habitats human and domesticated animals are now more likely to have contact with wildlife due to the loss of habitat and ये directly हमको help करछि कोठी human and animal conflict wildlife conflict एथरे मध्ये help करछि एथरे मध्ये गोटे एंगल दे आपे हमको सहायता करबो सो हाउ कॉमन आर
they so 60% of pathogens like harmful germs like virus, bacteria, parasites and fungi that cause human diseases originate from the domestic animals or wildlife. 80% of pathogens that are of bioterrorism concern come from the animal too. So a threat to the livelihoods. More than 20% of global animal productions losses are connected to animal diseases. Animal diseases endangered the livelihood of rural communities that depends on livestock and productions. Okay, now ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଜାଣିବାର ଯୋଉଟା ଜରୁରୀ ଯୋଉଟା ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ହେଉଛି ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ. What is One Health? Is a integrating idea that brings different sector together to solve health, productivity and conservation challenges and has major implications for India. In April 2022, a pilot project in the Uttarakhand was launched to implement the uh, uh, One Health framework by our health support unit. Okay, so the plan is valid from 2022 to 2026 and is aimed at mitigating the health challenges at the global, regional, and country level. Right? So WHO formed an One Health initiative to integrate work on human, animal, and the environmental health across the global organizations. WHO is also working with the Food and Agriculture Organizations of United Nations, FAO, the United Nations Environmental Program UNEP, and the World Organizations for Animal Health WOAH. WOAH. So, as a One Health quadripartite. Okay. So present scenario in India, the Prime Minister, Science and Technology and Innovation Advisory Council (PM) STIKE, PM STIKE. So approved the setup of National One Health Mission with a cross ministerial effort that will serve to coordinate, support, and integrate all the existing One Health activity in the country and fill gaps where it is appropriate. Right? So एमती भाव में आपको डिटेल मेंशन करछि ताकू चेक करने जिवे चैलेंजेस कोन अछि एटी गोटे लॉन्ग आंसर टाइप रो मु मेंशन करछि गोटे कंटेंट एटी फुल प्रूफ कंटेंट अछि आपण माने ताकू निहाती भाव में नोट डाउन करिवे. So then jiba next, Odisha CM to lay Bhubaneswar Metro Rail Foundation on January 1. So kon achi ye news re kain kitila why news? So the phase 1 of Bhubaneswar Metro Rail project has been approved by Odisha government at an estimated rupees 5,929 crores, while the project cost will be fully borne by the state government. এটা को मु काहे की इंक्लूड करली बिकॉज ए जो प्रोजेक्ट आपण माने जानि रखिबा निहाती दरकार ये फुल्ली borne by state government. ये सेंट्रल गवर्नमेंट रो आसुनी ए जो खर्चटी हेबो ये पूरा पूरी बियर करिवो state government. So Chief Minister Navin Patnaik will lay its foundation stone on January 1, 2024. The metro rail from Trisulia Square to Bhubaneswar Airport will have 20 stations. The metro will be extended to Khordha and Puri subsequent phase. Various phase re extend madhya kara jibo Khordha and Puri ko. Jiba next, Odisha based farm bakes deals to build firefighting tools for IAF, Indian Air Force. So Odisha recently got a company jota ki headquarter अछि तार Delhi रे Classic Technologistics and Trade Private Limited. ये कौन को ना ये जो VR virtual reality and augmented reality पाई ये जो डील पाई जी कहा पाखरु इंडियन एयर फोर्स रु फॉर द फर्स्ट टाइम ओडिसा रे गोटे कंपनी इंडियन एयर फोर्स रे ये चांस पाई छी लाइक तारो जो सेलिंग पर्पस रे. So founded in Odisha and headquartered at Delhi, the firm is the first in the country to manufacture the tools and cargo pellets that have been designed and developed by or developed in the collaboration with IIT Chennai. Okay. Now we जानिबा कि augmented reality कोन and virtual reality कोन. See आपण केतेले केमती आपण Instagram हो किंबा आपण नॉर्मली भी आजिकल का फोन रे बहुत सारा लाइक प्लेन सरफेस रे हमें कोन कोचु लाइक गोटे डायनासोर आस जिवो किंबा 3D प्रोजेक्ट ने 3D गोटे इफेक्ट आस जिवो
जोटा कि आम फिल कर नॉर्मल प्लेस रे आम ताको जदी कैमरा टाको मूव करछु ताले से हमको ऑटोमेटिकली गोटे सीन क्रिएट करके दे दोची सो दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी ओवरलाइज कंप्यूटर जनरेटेड 3D कंटेंट ऑन अ रियल वर्ल्ड यूज इन सो ऑगमेंटेड रियलिटी आपनकर आजिका डेट रे सब जगह देखिया पई पाइबे लाइक एबे पेंट क्षेत्र को जदी आपन चल जाउछंती लाइक एशियन पेंट हेगला एक्स वाई जेड जोटा कि मु नाम पे चाहुनी तो सेमानकर एप्लीकेशंस गोटे गोटे बाहरची सो ऑगमेंटेड रियलिटी आपन जदी चेक करिया पई चाहुछंती एप्लीकेशन तार डाउनलोड करिवे निजर प्लेन कांथरे ताको जदी आपन देखौछंती एंड सेथिरे कलरफुल पिक्चर सेमाने ऑटोमेटिकली निजर कलर को सेमाने शो कर दोछंती एंड आपन को रेफर कर दोछंती सो एई जो प्रोसेस होची ये होची ऑगमेंटेड रियलिटी so user is able to interact with real world and virtual world and user can clearly distinguish between the both the worlds se clearly distinguish kari paribo it is achieved by the smartphones tablet and AR wearable then come to virtual reality kon visually immerse the user with the simultaneous ऑब्जेक्टिव एंड एनवायरनमेंट जो अपन वीआर यूज करती सो वीआर जो आखिर देखिया पई कौन सी भी जिंस सो कंप्लीटली शट डाउन द रियल वर्ल्ड ये कौन करे पूरा रियल वर्ल्ड से तो ये कट ऑफ कर दिए एंड आपन को आखि सम्मुख रे ओनली से जहां देखिया पई चाहता है से गुडा कही थाए सो कंप्लीटली शट डाउन द रियल वर्ल्ड एंड मेक यूजर थिंक दैट they are really in the virtual world right so user finds it hard to differentiate between virtual and real world and it is achieved by VR headset only then come to new current affair that is Odisha CM Naveen roll out the scooter plan for SHG members. Why news? Because समस्त प्राय जना अछि चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो लॉन्च करथिले एथिरे कोन ना अंडर द स्कीम्स SHG members will get a full interest subventions on bank loans up to 1 lakh for the purpose of scooters. The government will pay rupees 528 crores as interest for the loan over the next 5 years आगामी 5 वर्ष पर्यंत इंटरेस्ट जो ये पई लोन देवा पई सरकार को तरफ रु 528 कोटी टका खर्च होची ओके जिबा नेक्स्ट ओडिशा लॉन्चेस द concessional bus rides for the women student and PWD जोटा कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू ओके पर्यंत मध्य चालीची इशू so why news the state government has introduced the concessional fare for women student and persons with disabilities so traveling in the bus under the locations access multimodal initiative or lakme schemes आपण माने जानि छथि what is lakme scheme जदि जाननाति मोर previous video check करने पे previous video रे मु clearly mention करछि और lakme video lakme bus बा लक्ष्मी बस विषय रे आपण जो जानि छथि लक्ष्मी बस बेसिकली एबे रिसेंटली न्यूज रे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रडिक्शंस चलतला सो लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक so the concessions in the bus fare for the student will be applicable on the productions of valid school college identity card Lakshmi Bus. Yes, Lakshmi Bus. So authenticated proof from the component authority, the PWDs will have to produce an identity card on or authenticated proof from the competent authority like BDO, commissioner or executive officers of municipality corporations, municipality, NSC or district social welfare office concerned. Welfare measure सब कौन सब निया आइछि women and student and PWDs will be charged a flat rupees 5 to 10 for block so एमती state पूर्वरु कर्नाटक ऑलरेडी नहीं सारिछि बट समस्त को पाइ न डिसेबल्ड पर्सन्स मानक पई ओके कर्नाटक so no cap on distance travel PWDs and students are required to produce necessary documents to avail the benefits जीवा परवर्ती क्वेश्चन को परवर्ती करंट अफेयर को श्री रत्न व्हाट इज श्री रत्न so the Odisha University of Agriculture and Technology OUAT has developed a new high yield nutritious rich millet variety the variety named Sri Ratna or precious jewel grain has already been piloted in a few districts on the state and would soon be prompted across the country. It is suitable for both Kharif and Rabi seasons. The new variety comes at a time when millet topped the menu at the dinner hosted by President Draupadi Murmu for G20 leaders, indicating the global acceptance.
thank you Itisri. Yes, health ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର କଜ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବଣି ଓକେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଲେଟ୍ ରେ ଆସିଛି ବିକଜ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଏ ମେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ ବହୁତ ସାରା ଏଥିରେ କମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଥଲି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଏ ରହିବ କି ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଟପିକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସରେ ଯେମିତି ହେଲ୍ପ ମିଳିବ thank you thanks for your appreciation itisri and yes so इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट जो घोषणा कराई तो सेमती सोल प्रायोरिटी रही कि ओडिशा केमती भाव लीड करिवो एंड ओडिशा नाम नहीं कि इंडिया केमती भाव लीड करिवो से होची प्रायोरिटी सो द सेमी ड्वार्फ प्लांट हाइट मीडियम साइज लाइट ग्रीन लीव्स एंड लाइट ब्राउन सीड्स okay the new variety has a medium maturity period and around 117 days it is resistant to brown spot and foot rot diseases right so moderately resistant to blast diseases and stem borer so aphids and grasshoppers so याको ऊपर जेमती इफेक्ट पड़िबो तो ये जेमती नष्ट करि परिबेनी तो सेही हिसाब रे रेजिस्टेंस मध्ये यूज कराउची so healthy and nutritious so the variety named Sri Ratna has already been piloted in few districts of the state. Sri Ratna has an average yield of 2350 kg per hectare. So it is obvious कि per hectare रे एतिकी kg per hectare. So it has 50.2 mg per kg iron and 21.6 mg per kg जिंक पर केजी रे हमको 21.6 मिलीग्राम हमको जिंक मिलुची एंड पर केजी रे हमको 50.2 मिलीग्राम हमको आयरन मिलुची ए मिलेट से श्री रत्न then come to next current affair international water association lauds odisha's drinking drink from tap missions so drink from tap mission जोटा कि सक्सेसफुली रन होची executive director of international water associations uk london dr kalanithi okay Bhairava Murthy, Kalinithi Bhairava Murthy on Saturday launched the Drink from Tap initiative. Yes, Drink from Tap initiative of the state government addressing the state level functions for dedicating drink from the tap water supply in 18 city, Otrada city. Objective कौन अछि provide drink from tap provide 24 by 7 drink from tap quality water to every household in urban Odisha so that water received from household taps can be directly used for drinking and cooking without further filtering or boiling. तो पूरा crystal clear water तमको केमती provide कराजिबो. Reduced health risk to citizens caused due to the contaminations of water arising out of intermittent supply to eliminate household investments on overhead water tank, underground reservoirs, motor pump, RO-based water filter, 100% metering of household water connections to reduce non-revenue waters. Okay, and adoptions of innovative state-of-the-art technology and management techniques tools. So equitable, sustainable, and people-centric service provisions with the focus of urban people. Mega lift irrigation scheme benefit farmers. Mega lift scheme irrigation କାହିଁକି ଏବେ ମାନେ କନସେପ୍ଟ କୁ ଆସିଲା ବିକଜ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଡାଟାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି यार ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ये ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି मेगा लिफ्ट इरिगेशंस सो ଆମର जो ओडिसा रे ଚାଲିଛି द पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम हैज not only had a significant impact on living standard of farmer increasing the production and crop yield in the project areas has also added the state's gross domestic product. The study conducted by NABARD याकू study को conduct करतला कौन पाइला consultancy service focused on the qualitative and quantitative impact on the infrastructure of project in the 5 important sectors such as irrigations, rural connectivity, food control, drainage and rural drinking water supply. Okay, so amara एबे पर्यंत लिफ्ट इरिगेशन कोठी कोठी अछि ये होछि भरासुगा मेगा लिफ्ट इरिगेशन okay in Balangir district, Tamdei mega lift irrigation Bargarh district, then Saira mega lift irrigation project in Sambalpur district, then Gogar
mega lift irrigation project in Sundargarh district. The sample projects are providing irrigation 4,456 hectares. ଏବେ ଜାଣିବା what is lift irrigation. So lift irrigation कौन? Lift irrigation is a method of irrigation in which water is not transported by natural flow to high to low level को जाए steep wall देकी किंबा पहाड़ एरिया देकी ऊपर तळु पर्यंत फ्लो करिवो से नेचुरली जीवनी तो ताकू पंप सेट द्वारा हमें बाहर करवा देन हमें पठेवा बहु जगह को ओके ताकू कहा जाए लिफ्ट इरिगेशन. सो उठा जल सेचन भी हमें जानिचु नेचुरल फ्लो. सो बट दिस लिफ्ट विथ द पंप्स और अदर मींस सो एमती ए प्रोसेस द्वारा लिफ्ट करा जाए आपण देखिने. सो ए जो प्रोजेक्ट लॉन्च हितला 2011-12 रे द पार्वती गिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम is one of the flagship program of state government aimed to provide the assured irrigations to 5.12 lakh hectares of agriculture highland areas through 378 projects by 2025-26. Meanwhile, 200 out of 208 projects worth rupees 7,500 crores have been completed. Right? उठा जल सेचन. Yes. तो अभी हमें जानिबा कि पार्वती गिरी को विषय कि पार्वती गिरी किए. सो 19 जनवरी 1926 रे तांकर जन्म. 1926 रु नेकी 1995 पर्यंत तांकर कार्यकाल थिला. जने फ्रीडम फाइटर ताकू मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा मध्ये कुआ जाय. इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन आइडियाज शी ट्रेन्ड villagers to spin and weave khadi. At the age of 16 she was at the forefront of the Quit India movement, later opened an orphanage and dedicated her life in the service of orphans in the Sambalpur district. Then served jail terms during the freedom struggles, worked for the jail improvement and leprosy eradication. So बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी थिले पार्वती गिरी. तांको ही नाम रे उठा जल सेचन को नामित कराइछि. तो से होचंती मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा भी जाना जाय. जेतले भी एमिनेंट पर्सन ऑफ ओडिशा आसीबो क्वेश्चंस तो आपण माने याको नाम भी मेंशन करि परिबे फ्रीडम फाइटर हिसाब रे एंड बहुत सारा डेवलपमेंटिंग वर्क करचंती. सो देन हमें जीवा प्रतीक्षा विन्स द नेशनल फिल्म अवार्ड्स. व्हाई न्यूज? बिकॉज़ आपण माने समस्त को जाना अछि प्रतीक्षा 69th नेशनल फिल्म अवार्ड ओडिया फिल्म अवार्ड टॉप ओडिया फिल्म अवार्ड बेस्ट ओडिया फिल्म अवार्ड पाइछि. कहा बाकरू लाइक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. राइट? Okay, so inspired by a book written by award-winning author Gaur Haridas. Odisha to follow new strategy to reduce carbon footprint. Why news? As Odisha's per capita greenhouse, yes, Odisha's as Odisha's per capita greenhouse gas emissions are second highest in the country next to Chandigarh. Chandigarh fast achi, and the expected to grow with the compound annual growth rate for 6% कोठी ना कार्बन फुटप्रिंटिंग रे. सो कार्बन फुटप्रिंटिंग रे को डिस्ट्रिक्ट हमर मैक्सिमम प्रोवाइड करचंदी से होचंदी केउझर, अनुगुल, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ एंड जाजपुर मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया. सो कार्बन फुटप्रिंटिंग कोन कोठी कंट्रीब्यूट कराय छि आपण माने देखि नंतु व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट मु कहि देउछि. So a carbon footprint is a total amount of greenhouse gas. So a carbon footprint is the total amount of greenhouse gas, primarily carbon dioxide released into the atmosphere by the particular human activity. मनीष मानकर जहाँ भी activities होची like गाड़ी चलेबा ठारू start करिके irrigation purpose रु बहुत सारा activity जोथरे भी carbon बाहर होची emit होची ताको कहा जाय carbon footprint. Chandigarh became the first state on the union territory in India to launch carbon footprinting or carbon footprinting launch carbon watch, a mobile applications to access the carbon footprinting in of an individual. Chandigarh first launch करछि because ये topmost position अछि जो emit करिबारे मन रखंतु. That's why ये launch करछि. तापर सेकंड रे ओडिशा अछि. तो carbon footprinting कोन according to the WHO health World Health Organizations, a carbon footprinting is a measure of the impact of people's activity have on the amount of carbon dioxide CO2 produced through the burning of fossil fuels and is expressed as a weight of CO2 emissions produced in tons. Tons रे ताको express करा जाय. It is usually measured as the ton of CO2 emitted per year, a number that can be supplemented by ton of CO2 equivalent gas, including methane, nitrous oxide, and other greenhouse gases. It can be
a broad measure or be applied to the actions of an individual, a family, an event, an organizations, or even an entire nation. So carbon footprinting versus ecological footprinting. Carbon footprinting or carbon footprint is different from ecological footprint. While the carbon footprint measures the emission of gas that contribute to the global warming, the ecological footprint focus on the measuring the use of bioproductive space. So ये measuring unit ऊपर depend करे bioproductive space रो. Effects of high carbon footprint. कौन हबो effect? The climate change is ultimate effect of large carbon footprint. Greenhouse gas, whether natural or human produced, contribute to the warming of the planet. From 1990 to 2005, carbon dioxide emission increased by 31%. By 2008, the emissions had contributed to 35% increase in the radiative warming, or a shift in Earth's energy balance toward warming over 1990 level. According to World Meteorological Organization's WMO records, 2011 to 2020 was the warmest decade on record in a persistent long-term climate change trend. So depletion of resources, large carbon footprints deplete resources on the large scale, from the country's deforestation activities to one homes increased use of air conditioning, right? So method of reducing the carbon footprint आपण जानि रखितांतु, because ये मेंस निहाती भाबरे हेल्प करिवो. Adaptation of 4 R's like refuse, reduce, reuse and recycles, and बाकी सब information मध्ये मु प्रोवाइड कर देछि. जिबा नेक्स्ट, forgotten crops get Odisha cabinet attention. Why news? Because forgotten crops रे like maize आछी, jute आछी, तो एई सब क्रॉप्स को केमति भाबरे आउथर रिहैबिलिटेट करा जिवो, आउथर केमति भाबरे फ्लोरिश करिवो, सेतमे गवर्नमेंट एबे चेष्टा करछंती. So in a bid to revive the intensify forgotten crops in the state cabinet decided to launch a scheme under the crop diversion program with an outlay of 481.94 crores. The scheme also includes the Mukhyamantri Makka Mission, which envisages enhancing the production and productivity of maize and improving the value chain of the marketing, promotion of forgotten crops, maize, cotton, jute. Okay, launch of Mukhyamantri Makka Missions, and rupees 700 crores for fertilizers for 5 years. Then coveted agriculture award for Odisha scientist or Odia scientist. So Odia agriculture scientist Dr. Swati Nayak has received the prestigious Norman Borlaug Field Award 2023. ता पूर्वरु मते कोंतु कि who is Norman Borlaug, किए Norman Borlaug, काहेकि एग्रीकल्चर सेक्टर तांकर नाम अछि. So Norman Borlaug Award 2023 for her innovative research and applications in the field of food and nutrition. She received the award that carries a cash reward of rupees USD 10,000 at Des Moines Loa. किए होचंती नॉर्मन बोरलाग, मते कोंतु who is Norman Borlaug? Just inform me quickly. Norman Borlaug किए? Father of Green Revolution. Very good. Okay, so the award is given by the World Food Prize Foundation to an individual under 40 or 40 for exceptional and science-based achievements in the international agriculture and food productions. So that's it. एई जो मंथ पई जो करंट अफेयर एतिकी हितला. Yes, Sasmita, father of green revolution, and amaro India रे किए MS Swaminathan. सो एई मंथ पई बा अक्टोबर मंथ पई एतिकी आपनकर रेलेवेंट करंट अफेयर थिला, जोटा कि आपन एग्जाम रे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आसबार चांसेस रहिछि. आपन याकु निहाती भाबरे थरे पढिबे. देन यारो जो कॉपी अछि बा यारो पीडीएफ आपन मानको अवेलेबल हे जिवो ray.academy साइट रे किछि जस्ट 1 to 2 days भितरे. ओके, सो एनी काइंड ऑफ एप्रिसिएशन और किछि भी कंप्लेन जदि अछि मैगजीन को नेकी बा किछिटा चेंजेस जदि आपण माने चाहउचंती, तो निहाती भाबरे जस्ट मु एबे 10 to 15 सेकंड रो विंडो एबे ओपन करली आपण मानको पई. निजर मतामत मते निजर फीडबैक मते शेयर करंतु. आफ्टर दैट आमे आजिरो सेशन को एंड करिबा.
सो आपनको समय बे स्टार्ट हेची जस्ट 15 सेकंड रे आपण निजर निजर क्वेरीज निजर एप्रिसिएशन फीडबैक मत प्रोवाइड करन सो दैट कोन सब चेंजेस आगु करिवार अछि मुनिहाती बाबरे ग्रहण करी कि याकू आहुरी भी बेटर वे रे प्रेजेंट करी आपण को सामने रे एवरीवन यस just give your quick response quick feedback thank you Soumya thank you Sasmita and thank you each and everyone जो माने एते डेरी धरि कि एई जो सेशन ने कनेक्ट हेकि रहले निजरो फीडबैक प्रोवाइड करले निजरो क्वेरीज प्रोवाइड करले निजरो आंसर समस्ते प्रोवाइड करले ओके एमती बारंबार मु आपण मानक पई दृष्टिकोण माध्यम रे कनेक्टेड हेकि अछि सो दृष्टिकोण जेमती भाबरे मु डे 1 प्रिपेयर करी आसी दृष्टिकोण को जो एंगल मु प्रिपेयर करी आसी आपनकर एग्जाम रे प्रति वर्ष से किछि ना किछि कंट्रीब्यूट करिवो प्रति मास आपनकर क्वालिटी एनहांस हबो ताई मु आशा करिवि सेही आशा नै कि मु आगु को मध्य आपनक पई आहुरी बहुत सारा इफेक्टिव नोट्स सब प्रिपेयर करके प्रोवाइड करिवि दृष्टिकोण रे सो दैट आपनको ये हेल्प करिवो ओके सो यस थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू आपण मानको कोई दृष्टिकोण रो मैगजीन विदिन 2 to 3 days अवेलेबल हे जिवो साइट रे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ताको डाउनलोड करके आपण माने पढी परिबे एंड दैट्स इट गुड नाइट एवरीवन समस्त भल रहंतु एंड प्रिपरेशन को आहुरी जोरदार करंतु आपनको सहित पुणी थरे दृष्टिकोण रो सेशन देखा हबो नेक्स्ट मंथ रे